A very good evening, viewers. It's 6 p.m. and it's your one-stop destination for all the stories from across the length and breadth of the nation. We'll get you all the latest stories. First, our focus will be on Kashmir, where it has recorded a historic voters' turnout. We'll get you the figures at 6 p.m. when we start the show. And another important promise that the central government is looking to fulfill in its third term is the One Nation, One Poll. The cabinet has approved the Kovind report, and all eyes will be on whether this will become a reality or not. And in Bengal, the biggest question is there a bigger fish that's on the run? Because Sandip Ghosh has been arrested. The SHO of Tala Police Station has also been arrested, and now they have been confronted with the officer in charge at the Tala Police Station. Phone records are also under the lens. So we'll get you all the latest in the Kolkata story after a quick look at the headlines. Presented by Royal Global University, Northeast can't wait. Pado kuch bano. सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा. Center accepts Kovind report on One Nation, One Poll. Modi 3.0 looks to fulfill the simultaneous poll's promise. Indeed, doubts One Nation, One Election. Pinarayi says hidden agenda aimed at weakening India's federal structure. Congress says the move is against democracy. India sends notice to Pakistan seeking modification of Indus Water Treaty. Warns Pakistan says terror and water don't go together. "24 seats of Jammu and Kashmir go to polls in phase 1. 58% voter turnout recorded till 5 p.m. Probe into Abhaya's rape and murder case picks pace. CBI teams probe CCTV footage from Tala Police Station. The phone records are also under lens. Presented by Royal Global University, Northeast can't wait. Pado kuch bano. First up, viewers, in a historic first since the abrogation of Article 370, Jammu and Kashmir is witnessing assembly elections with over 23 lakh voters casting their ballots across 24 assembly constituencies in the phase 1 of the assembly elections. And now, amid the heightened security, key battles unfold in Jammu and Kashmir, while in some regions there were tensions as well between party candidates. As Naya Kashmir gets ready to welcome a new government, the question is, who will it favor? Here's the story. Five years since the abrogation of Article 370, the Valley is for the first time since hosting elections. 24 assembly seats, over 23 lakh voters, the fate of 219 candidates has been sealed today. अरेंजमेंट जो इलेक्शन के लिए हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो किए हैं और लोग आराम से वोट डालेंगे. इसमें हमारे हर तरह के जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है वो किए हुए. सर, कुल कितने पोलिंग सेंटर्स हैं और वहाँ पर नफरी किस तरह से डिप्लॉय की गई है, क्योंकि हाइपर सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस भी हैं, दूर दराज के इलाकों में पोलिंग स्टेशंस भी हैं? हमने सभी 429 पोलिंग स्टेशन है उस पर जो हमने लगा उसके हिसाब से सिक्योरिटी अरेंजमेंट बढ़िया किए हो. थैंक यू सर. मान के चलें कि सुरक्षा पूरा शांतिपूर्ण चुनाव हो? बिल्कुल शांतिपूर्ण हो. The stage is set in East Kashmir, where Hasnain Masoodi of the National Conference faced off against two-time winner Zahoor Ahmed Mir of the PDP. These young voters are ready to cast their vote for the betterment of the Naya Kashmir, as well as we have seen from the last couple of months, we have seen normalcy in the Kashmir Valley after the abrogation of Article 370. In fact, this is the first election that the assembly polls which are underway. A former MP from Anantnag, Masoodi now aims to dethrone Mir from the key constituency of Pampore. A
true testament to the spirit of democracy, the voter turnout numbers indicate that the valley has now chosen the ballot over the bullet. मैंने आज से लगभग 6 महीने पहले कश्मीर में भी बोला था कि जो धारा 370 धराशायी हुई और जिस लोकतंत्र के मंदिर में इस धारा 370 को एब्रोगेट किया गया, उसी लोकतंत्र के मंदिर के चुनाव के लिए लोगों ने लंबी कतारों में खड़े होकर उस 370 की एब्रोगेशन को लेजिटिमेट ठहराया। सिचुएशन पूरे जिले के अंदर वो पीसफुल है, लोगों में बहुत जोश है और बढ़ चढ़ कर लोग जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने भी लोगों से यही अपील की है कि 100% यहाँ पोल होना चाहिए। हमारे पास ज़िले के अंदर 429 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें से 130 पोलिंग स्टेशन ज़िले के अंदर क्रिटिकल डिक्लेयर किए गए हैं। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन के ऊपर एलेबरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है एक्स्ट्रा एडिशनल हमें किए हैं। And while people thronged booths across the Chenab region, these were the scenes at a polling counter in Kishtawar. EDP leader Firdaus Tak has been accused of heckling BJP candidate Shagun Parihar. यहाँ पे अभी मैं जब यहाँ आई थी, यहाँ पे फेक वोटिंग्स हो रही थी, बुरके में लेडीज को चेक नहीं किया जा रहा था। लेकिन मैं जब आई, मैंने कहा आप एटलीस्ट आधार कार्ड जो आपका इलेक्शन कार्ड है उसमें भी आपकी फोटो नहीं है। तो मैं यहाँ सब चीज़ें इजीली हो रही थी, लेकिन वो यहाँ आए, उन्होंने बोला हमारे कैंडिडेट के पास अगर स्लिप नहीं है वो तब भी अंदर जाएगा, और उन्होंने ये चीज़ बोली और उसके बाद उन्होंने मुझे धक्के मारने। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि उनकी नीतियाँ, उनकी करतूतें जो है लोगों के सामने हैं, और डेलिबरेटली जो मुस्लिम मेजॉरिटी पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं ताकि पोलिंग कम हो। ये सारा उसी का गेम प्लान है, और वो भी उनको गालियाँ निकाल के धक्का मार के लेट वाज चेकिंग द आईडी कार्ड ऑफ वोट। नॉट ओनली चेकिंग, वो धक्का मार रही थी, गेट आउट ऑफ हियर। The BJP has upped the ante against its battleground enemy and decided to approach the Election Commission. देखा नहीं, एकदम कुछ नहीं ऐसा है। यहाँ लाइन लंबी है और थोड़ा स्लो चल रहा था, इसकी वजह से हो गया है। रिज्यूम हो गया है पोलिंग, और सब लोगों को है कि पोलिंग होने दो आराम से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इसलिए मैं खुद आया हूँ देखने के लिए, और जो मुझे यहाँ इनपुट मिले हैं यहाँ नॉर्मल है, सब नॉर्मल चल रहा है। With the first of 3 phases of elections drawing a close, which way will Naya Kashmir tilt? Well, moving on, viewers, the CBI has ramped up its investigation into the arrest of former Arjikar Medical College principal Sandip Ghosh and Tala Police Station officer in charge Abhijit Mondal with new evidence, including mobile records and also CCTV footage. The probe is now tightening around the duo. Let's get straight to the latest developments. The CBI has intensified its investigation into the arrest of former Arjikar principal Sandip Ghosh and the officer in charge of Tala Police Station, Abhijit Mondal. Sources close to the ongoing CBI probe revealed that investigators have confronted Ghosh and Mondal with their mobile phone records and key witness statements. The CBI is also examining CCTV footage from the Tala Police Station and has requested an extension of custody to interrogate the duo over suspicious activities captured on the security cameras. Investigators have additionally uncovered suspicious phone numbers and are now seeking their call detail records as part of the probe. Sources indicate that the CBI plans to confront the Tala OC with the phone records of these suspicious numbers once they are obtained. Abhaya's parents had previously approached the CBI with severe allegations against the former Arjikar principal Sandip Ghosh and Tala OC Abhijit Mondal, demanding a thorough investigation. Sources close to the probe further revealed that both Ghosh and Mondal have been evasive and uncooperative, prompting the CBI to seek extended custody to extract crucial information and uncover more leads in this explosive case. Abhaya's parents, unwavering in the fight for justice, reiterated their faith in the Supreme Court to push the CBI probe to a definitive conclusion and ensure that justice is delivered. They emphasized that the Apex Court had underscored the very lapses and anomalies they had been pointing out from the start, adding fuel to their demand for accountability.
In no uncertain terms, they demanded that all those responsible for their daughter's brutal rape and murder, as well as the destruction of key evidence, must be brought to justice without any further delay. সুপ্রিম কোর্টের ওপরে আমাদের 100% ভরসা বারবার বলছি এবং তারা সঠিকভাবে আমাদের এই যে বিচার ব্যবস্থা ঠিকমতো চালিয়ে নিয়ে যাবেন এবং সবাইকে গাইড করে একটা সুষ্ঠু সমাধান করার চেষ্টা অবশ্যই করবে। বলছি যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি প্রধান বিচারপতি বারবার একটা কথাই বলছিলেন যে বাবা মার যে কথা যে চিঠি আপনি দিয়েছেন সেই চিঠিতে সূত্র আছে, গুরুত্ব দিতে বলেছে। শুনুন, এইটা বিচারাধীন বিষয়, তিনি যেটা ভালো মনে করেছেন তাই বলেছেন। না, সেটা বলা যাবে না, এটা একটু অসুবিধা আছে। সুপ্রিম কোর্টে আজকে যে সিবিআই যে রিপোর্ট, স্ট্যাটাস রিপোর্ট, তাতে দেখা যাচ্ছে যথেষ্ট বিচলিত কোর্ট, যে তথ্য রয়েছে। হ্যাঁ, সেটা তো হওয়ার বিষয়। আমরা প্রথম দিন থেকে যেটা বলে এসেছি, সুপ্রিম কোর্ট সেটাই সামনে তুলে ধরেছে। কারণ তথ্য প্রমাণ এইভাবে লোপাট করলে একটা সংস্থাকে সেটাকে খুঁজে বের করা একটু কঠিনই হয়। এখানে তো তথ্য প্রমাণ লোপাটের অনেক পাওয়াই গেছে এবং তার জন্য তো একজনকে তারা গ্রেপ্তারও করেছে। ওসিকে গ্রেপ্তারের পর এবার অ্যাডিশনাল ওসিকে তলব করলো। কি বলবেন, পুলিশ একেবারে জড়িত ছিল পুরো ঘটনার সঙ্গে। ও তথ্য প্রমাণ লোপাট করার জন্য সে তো বেরিয়ে আসছে সেটা। With the probe in full throttle and noose tightening around the arrested former RGCR principal and Tala OC, the CBI appears on the verge of cracking open the larger conspiracy at the heart of this explosive case. Now moving on, viewers, shifting our focus to what happened in Maharashtra last night at 2 a.m. A Ganapati procession was making its way through the narrow streets of Bhiwandi. And as it passed via a mosque, stones were pelted at the Hindu procession. Now the big question is, who is the Hindu procession irking? The police have cracked down. One suspect has been arrested and protesters were also lathi charged after the situation went out of control because the stones that were pelted damaged the sacred Ganesha idol. Here's what exactly happened. Ganesh procession targeted in Bhiwandi. Stones pelted at procession. Police respond with lathi charge. Tensions flared in Bhiwandi around 2 a.m. last night. Communal violence erupted after a Ganesh procession was attacked by a mob as it passed near a mosque. The idol was damaged and several members of the procession sustained big injuries. As the situation escalated, crowds from both communities began to swell, heightening the tension. Hindu devotees demanded the arrest of the attackers and declared that the Ganpati immersion would not proceed until justice was served. Scuffles broke out between the swelling crowd and the police. In an attempt to control the situation, the police resorted to a mild lathi charge, resulting in injuries to both the protesters and the officers. Sources say that the crowd apprehended one suspect and handed him over to the police. 12:30 के दरमियान पत्थर गिरा ऐसे एक चर्चा शुरू हुई और कुछ बच्चों में आपस में बहस हुई और भागदौड़ हुई। उसके बाद मंडल के पदाधिकारी जो वहाँ बंजारपट्टी नाका है वहाँ रुके हुए थे और वहाँ भीड़ बढ़ती गई दोनों बाजू से और इसलिए वहाँ जो हमारे मौजूद पुलिस अधिकारी थे उन्होंने वो टेंशन वहाँ का डिफ्यूज़ करने के लिए वो भीड़ को वहाँ से भगाया। अब यहाँ की सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। Outraged by the idol's desecration, members of the procession staged protest. बीती रात गणपति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी के बाद पूरे भिवंडी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया गया। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं भिवंडी की। भिवंडी से थाने इलाके से पुलिस को यहां पे डिप्लॉयड किया गया और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया गया, क्योंकि जिस तरह से बीती रात पत्थरबाजी होने के बाद जिस तरह से पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, इसके बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और जो कार्रवाई है शुरू कर दिया है, पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल भिवंडी शहर में और ग्रामीण इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया गया है। Now a tragedy, viewers, struck
the Karol Bagh area in the national capital today after a building collapsed, killing 3 people and leaving 14 others injured. The fire tenders were rushed to the spot and the rescue operations have concluded. Here's what exactly happened. Tragedy struck in the heart of Delhi's Karol Bagh on Wednesday as portions of a residential building crumbled, leaving behind scenes of devastation and once again raising questions about the safety of life in the capital. In the narrow lanes of Bapa Nagar, emergency responders scrambled in a race against time after frantic calls alerted them to the collapse. The cries for help rang out as neighbors gathered, helplessly watching the scene unfold. 5 fire tenders accompanied by a team of rescuers were rushed to the spot. With each passing moment, the weight of uncertainty grew heavier as the rescue operations went on. And I would just request my video journalists to just show the visuals over here, to just show that how exactly this entire operation right now is panning out. And there are officials from Delhi Police, there are officials from Delhi Fire Service, and there are also officials from NDRF who are right now carrying out the rescue work. So far, at around 12:10 p.m., there were over 12 persons that have been rescued. But you can understand the challenges of this entire operation because the area in which this operation is being carried out, it's a very crowded area, it's a densely populated area, and the lanes are quite narrow and constricted. Heart-stopping visuals from the scene show rescuers digging through rubble, hoping to find survivors amidst the remnants of what was once a home. So far, 9 individuals have been pulled from the wreckage, their faces etched with shock and fear. But for many, hopes remain fragile as more are feared to be still trapped in the rubble. A local resident who spoke to Republic alleged that illegal floors were added to the already unsafe building, a risk that went unnoticed. क्यों हुआ ये इंसिडेंट पहले तो मुझे बताओ क्योंकि ये मतलब मेरे फादर के मतलब एक्सपायर हो गए हैं अभी वो 57 इयर्स के थे। मेरे पापा बताते जब वो 10-12 इयर्स के थे ये तब से घर है ये मकान इतना ज़्यादा कच्चा था, बहुत ज़्यादा कि मतलब लोग रह रहे थे, वो अपने रिस्क से रह रहे थे, कुछ उनकी भी गलती है। अभी थोड़े दिन पहले भी ना बहुत सारा मलबा गिरा था इस घर में से, तो काफ़ी लोगों ने मतलब अपने मकान मालिक जो वहाँ पे रहते हैं लिबर्टी की तरफ रहते हैं उन्होंने कंप्लेंट की थी अपने मालिक को, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ। वो सिर्फ यहाँ पे आते हैं, एक तो पैसे लेने आते हैं, किराया भाड़ा लेने आते हैं, उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं करते। Chief Minister designate Atishi, expressing sorrow over the incident, called it a heart-wrenching tragedy, one that no family should endure. In a message on her X handle, Atishi directed officials to extend immediate aid to the injured, underlying the need for swift action as the situation continues to unfold. Will this just be one kind of incident which is going to come and go, resulting in no kind of corrective measures that will be taken by the administrative officials? That also includes the Municipal Corporation of Delhi, which also earlier has faced wrath of its apathy. While Delhi readies for a new chapter in its political leadership, the tragedy in Karol Bagh stands as a grim reminder of the urgent need for change on the ground. How many more lives must be risked before safety becomes a priority? As the Modi government turned 100 days yesterday, Union Home Minister Amit Shah made a big declaration that one nation, one poll will be a reality soon. And a day after that, the Union Cabinet has approved the Kovind report, which is about 18,000 pages, which means that the Modi 3.0 will be looking to fulfill the one nation, one election promise. A day after completing 100 days, the Modi government 3.0 has fulfilled another promise. The much-awaited One Nation, One Poll is soon to become a reality. The centre has unanimously approved the panel commission report led by former President Ramnath Kovind recommending the One Nation, One Poll policy. Simply put, the state and the Lok Sabha polls will be conducted simultaneously, same year, if not at the same time. The One Nation, One Poll is not new to the country. In fact, India held several simultaneous elections till the year 1967. The Union Cabinet further elaborated on the simultaneous elections plan.
वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है. हाई लेवल कमेटी recommendations on one nation one election, on simultaneous elections, those recommendations have been accepted today by the Union Cabinet. And as you are aware, 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे. उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे. जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो ना हो. बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है, बिकॉज पुलिस मैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर. वो सब जो बड़ा एक बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है वो ना हो. और एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है, जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेज़ी से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ केयर का हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, उसमें इलेक्शन के प्रोसेस से बार बार जो बीच में एक तरीके से उन सब को एक स्मूथ तरीके से डेवलपमेंट चलता रहे. और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये रिकमेंडेशन, ये सजेशन देश में जगह जगह से अलग अलग फोरम से आया है. President Kovind-led panel came up with a plethora of recommendations. The One Nation, One Poll is all set to be implemented in 2 phases. While the Election Commission of India is yet to devise the logistical requirements, Lok Sabha polls and state polls are all set to be held concurrently in the initial phase of the implementation of the recommendations. Notably, Prime Minister Narendra Modi himself told Republic's editor-in-chief Arnab Goswami about his One Nation, One Poll vision. Soon after the union government's nod, the Indie Alliance was quick to react and express their opposition to the big move. हम तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में. ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा. We, India Alliance, also told earlier itself, it is not at all practical in this country. One nation, one election is not at all practical in this country. They also know about that. They want to divert the attention of the present issues. As the political to and fro continues to mount, all eyes are on what's next after this grand nod from the union government.